हेलो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube लाइव में आपका फिर से स्वागत है। आज का प्रोग्राम तो कुछ प्लान प्रोग्राम नहीं है। आज हम जस्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आई कल, तो डिसीजन में काफी सारी कमियां भी रही हैं, काफी सारे पॉजिटिव भी रही हैं। कुछ दो तरह के पिटिशन गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास अबाउट द नीट पोस्टपोनमेंट, और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि नीट पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। तो दोनों के कल वर्डिक्ट आ चुके हैं। कल ही मैं इसका मतलब लाइव करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने नहीं किया। और ये जो वीडियो है नीट कैन बी वेव्ड ऑफ, इस पे भी लेकर के काफी क्वेश्चन आ रही है। तो कल का जो वर्डिक्ट है, काफी हद तक हमें नीट वेव्ड होगा कि नहीं इसका भी मुझे आंसर लगता है मिल जाएगा। मतलब इस वर्डिक्ट से काफी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नीट वेवर जो कि बोला जा रहा था कि नीट वेवर इस साल हो जाएगा, वो मुझे बहुत कम लग रहा है इस साल होने के चांसेस। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस बात पे लेके सर्टेन हो चुकी है कि नीट का एग्जाम मैंडेटरी है और नीट होना है, बच्चों को नीट का एग्जाम देना है ऑन 13 सितंबर, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब इसका नीट का पेपर होने के चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं। जबकि वो एक अलग पिटीशन है, उसका शायद 4 से 5 दिन और लगेगा, 3 वीक्स के अंदर बोला गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था, बट सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि इस चीज को भी अग्री करेगा। तो जसवा, आपका क्वेश्चन है नीट एग्जाम्पशन चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जाम तो कंडक्ट करनी पड़ेंगे फॉर लोकल स्टूडेंट। तो अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट के लिए कितना कंसीडर करेंगे और उसमें जस्टिस बेंच कौन बैठता है उस पर डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है ओवरऑल, नीट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो सही नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ने इसको रखा है कि भाई आपको नीट के एग्जाम देने पड़ेंगे। बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में भी है, तो मैं वो क्वेश्चंस को लेकर भी डिस्कस करना चाहूंगा। और अगर कोई आप लोगों में से कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछिए। हम लोग को ये रेस करना पड़ेगा अवेयरनेस, ताकि गवर्नमेंट को वो सही चीजें समझ में आए। क्योंकि नीट का एग्जाम कंडक्ट कराना बड़ी चीज नहीं है। अभी भी स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं। बट वहां पर गवर्नमेंट बोल तो देती है, या सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया कि प्रिकॉशंस लेकर के एग्जाम करने हैं। कोविड कैन नॉट स्टॉप द लाइफ ऑफ सो मेनी स्टूडेंट। ये सब बोलने और सुनने में तो अच्छी लगती है, बट जिस दिन एग्जाम होगा, okay, you want me to speak in English? Yeah, so the thing is ki when these exams will be conducted, all these exams, NEET exam or JEE exam will be conducted, the problem will be how this precaution will be taken, the social distancing, whether a student who have normal, because right now the monsoon is there almost 50% of India, and during monsoon there are a lot of apart from coronavirus, there are other diseases also. There can be small cold, flu can be there, malaria can be there. In general, normally what happens, I have fever, but still I can go and give the exam. But in this case, if somebody have fever which is not corona related fever, can this student can go and sit in the exam? Will the will at the gate, will they will be checked for their temperature and everything? And will temperature is only temperature can help them to check everything? Or there shall be some method of testing for corona instantly, like we have heard about such cases in China. Some of the provinces, they are testing, on spot testing of corona is being done. So will government sponsor the test kit of so many students so that they can be tested before the exam, just before the exam? And if at all somebody is corona positive, will there be a separate exam for this student? Because having a corona and being quarantined for 14 days cannot ruin their career for 1 year. If others are getting chances, why can't they get, even if they have corona? So how these things will be tackled, all NTA has to answer. So we have to wait for these answers, and accordingly then we can plan about, like rather government can plan about how the exams will be conducted. So more right now, government, Supreme Court has clearly said that the exam has to happen on the same date which was committed last time on 13th September. So please be prepared, and we can only tell our student to not think anything else, just go back to studies. Many students were like thinking that okay, this exam might not happen, so they were relaxed and they were not even attending online classes or the regular exam. So please, there is enough time. 25 days for revision of all this physics, chemistry, biology for NEET is enough. I think if you have done your preparation well during 11 12 and during coaching center, during your coaching, this 25 days of revision will help you. And NEET exemption for abroad, there is still chances, but as Supreme Court is not so lenient about
like not conducting the exam. I don't know whether they will be doing it, but there are chances. There are chances, but the chances which we were thinking that there will be high chance of NEET exemption, then chances have reduced. This is what I can feel. This is my own gut feeling. I cannot commit because if government is not ready to postpone the exam, I don't know it can even exempt the exam for overseas student. So and more and more petitions should come, and you people who want the NEET exemption should tweet directly to the government or to NTA or to MHRD, so that more and more people who tweet and tell them there can be some chances that they will consider this time one time exemption. But the logic of government and the logical thing is like, if you are going abroad, if you are ready to go to other country in a flight, the sitting for 3 to 8 hours. So if you think that in this 8 hours of journey you cannot be infected, then why you are scared about sitting in exam hall for 6 hours and thinking that it can be exempted? So that is the logic with which I think most of the people, most of the like government and government body is taking the decision. So still there is chance for exemption. If the NEET exempted, at least the student who are thinking to go abroad, they can definitely think about taking the admission, especially many students for whom this year will be the last time for admission, because in many country they only allow 1 to 2 year of dropout after class 12. So such student who are looking for admission in other country like Bangladesh, some new for few more countries are there where they don't allow more dropout, like year drops, 1 year, more than 1 year. So 2018 or 2019 dropout student can only take admission this year. After this year, they cannot even take admission in 2021. So if similar such countries are there where the students are not allowed to take admission with a year drop, or with some other condition, or the timing for admission is getting over, if this country don't extend their timing for admission, and this country and this universities should send some letter directly to the Indian embassy, and through Indian embassy these letters should come to the uh, Indian government or Ministry of Foreign Affairs, so that they can the government can, or the Supreme Court can act accordingly. But right now only some students are seeking exemption. Not many universities have asked for such exemption. So I will ask all those consultant, all those universities who are taking students from India to if at all they will not be able to take admission after end of August or after end of September, they should directly like fax or tweet or send some mail to Indian embassy, and via Indian embassy these information should come to Ministry of Foreign Affairs, and then it can play a role. Like there are many universities, many universities who are looking forward for student, and they are ready if they are coming without NEET. But whether the NEET exemption will be given by Indian government or by the Supreme Court, it's yet to be decided. Maybe by next week it will be decided. So we have to wait, but the chances are less. This is what I can feel. But I will be very happy if it can be exempted, at least because earlier I was not very open. Like earlier there has been cases just 3 months back I was not okay with NEET exemption. But as the time is going on, and the time is passing by and passing by, I can understand that there's very less time left for a student to choose their respective country, because the admission happens in many countries. From different country, the student comes to Ukraine or Russia or China or any country where they want to go study MBBS. But the problem is these countries are taking students from other country, but not from India, because from India anybody who want to go abroad, they have to pass NEET, and that NEET exam is yet to happen. So there's a big confusion, and let's see how Supreme Court takes all this points and take the decision accordingly. So Muhammad Ramiz Reza sir explain about internship of MBBS of Egypt. This video is not about Egypt, but still okay, as there is not much to talk about uh, NEET exemption right now, because we can mainly discuss there is less chance of NEET exemption as per my knowledge, but NEET is going to happen as on date as per Supreme Court. These two things are decided, and we can definitely look forward for admission in countries where the admission will be open after NEET also. The countries like Egypt, where the January session is there
as per the new guideline. There are countries like Nepal, where admission can happen till December, till November. Bangladesh, where the admission can happen till December. So these are the country where the student who might miss out because of non-NEET exemption. If the exemption of NEET is not done, then the student has to look out for the countries where the admission is late and they don't lose the year. So there are few countries, Egypt being one, Nepal being one, even Bangladesh. These are the country where the student can look forward for admission, even if the NEET is not exempted, and then after passing the NEET, of course, so the year is not wasted. But those who are looking forward for admission in countries like Belarus, Ukraine, Russia, these countries take the admission the student has to reach by October, by September end or October. So if the NEET happens as per time, even if the result is coming, the result has to come very fast, so that these students can go before or apply before October. Else it will be very difficult and they might lose year for if they choose such country. So you have to choose your country accordingly. Don't choose a country right now, or rather don't choose anything at all till you are very sure about NEET exemption. But because if you are choosing a country or college based on NEET, that you are assuming that NEET will be exempted, it might be a wrong decision right now, because if the government does not exempt NEET, then you might lose your money by if you're paying a consultant or paying the fees of an university. So I will be explaining about the internship of Egypt, Mohammed. Internship of Egypt is 2 years. If you are doing the internship in Egypt after completion of 5 years of your basic course, and in my last video I've explained you the syllabus of 5 years, so if you can go through that. And Egypt internship is of 2 years. If you want to practice in Egypt and get a license to practice everything, then you have to do 2 years of internship in Egypt. But if you want to come back to India, you can complete your internship of 1 year, and then accordingly you can practice as a doctor in India. And but before that you have to pass FMG exam, and which can be next exam after 2023. सर बांग्लादेश का सिलेबस सेम इंडिया जैसा है, फिर भी फिलीपींस से एमसीए पासिंग रेट कम क्यों है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, what happens in Philippines and what happens in Bangladesh are two different countries. In Philippines, the biggest the segregation of the biggest problem is the number of students who get admitted in different colleges of Philippines are much more. Like suppose 1,000 students get admitted in BS course in Philippines. Okay, so just listen to it like carefully and try to understand the situation. Now, as per Indian Embassy, only some percentage, almost 20-25% of seats are available in the colleges of Philippines for medical admission after NMAT exam. So what happens? Thousands of students are going to Philippines, not in hundreds number. Thousands and thousands of students are going to Philippines for BS course. And after the BS course, many are not able to pass NMAT, or even if they are able to pass NMAT, they are not being selected by their respective university, medical college. So what happens? These students have to leave the college or leave the country or wait for next year. So what is happening right now? The number of students who are being selected after NMAT are very less, and these are good students. So it is like those students who have qualified NEET now with good marks, they will definitely do well if they are studying well during the medical admission. So that is the logic about Philippines MCA passing percentage is high. Why? Because those students who are not able to pass, they are already examined. उनको पहले ही निकाल दिया गया during BS course. So obviously अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनका तो परसेंट हाई रहेगा. If you are comparing कि how many students took admission during the BS course and then compare that with exit of the student after passing the FMG exam, then the actual percentage will come. But yeah, overall the education of Philippines is good. It is in complete English language, and Bangladesh का syllabus same है. See, Bangladesh का syllabus same है, but student जो जाते रहे ना बांग्लादेश में, अब जाकर के student 2014-15 से गए हैं. So I can guarantee you, Mashar, just wait for 2-3 more years, and you will find that number of student passing FMG, the percentage of student passing FMG from Bangladesh will be much more, because only one college of Bangladesh
The name, if you want the list, I can send it to you. I'm not don't want to take the name. Only one college of Bangladesh have ruined the overall passing percentage of FMG of Bangladesh, because in that college there was a lot of issue, and it was a big problem earlier because it was not university. There was some issue, and most of the student took admission in that particular college in hundreds of number, because that declared itself to be a university, and there was some issue locally also. There was some problem in that particular college, and that led to downfall of the overall percentage of FMG passing, uh, reduction in the overall percentage of FMG passing. So the logic is, अगर आप college wise compare करते हो, if you are comparing college wise or if you are comparing university wise, you will find the passing percentage of Dhaka University colleges of Bangladesh is almost above 55 to 60%. All Dhaka University listed college of Bangladesh are having passing percentage above 50 to 60%. And Philippines is equally good. Masha, I am not saying like syllabus same है, फिलीपींस का भी सिलेबस काफी हद तक इंडिया से सेम है, डिजीज पैटर्न भी सेम है, सो दैट इज द लॉजिक. Philippines is equally good, but the problem is with the BS course. What is happening during the BS course itself? They are segregating all the students, so only good students are left, and who are good, they are able to pass the FMG exam. अब उस लॉजिक से तो यूक्रेन और रशिया में तो किसी को एफएमजी पास करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का सिलेबस ही अलग है. सो एट द एंड ऑफ द डे, गुड स्टूडेंट्स कैन पास एफएमजी और एनी काइंड ऑफ एग्जाम wherever they are, because they do self study, they dedicate their time, they involve themselves in the education. So that is the logic. According to you, which university is best among Cairo Medical and Sams and Mansoura? Cairo is good, Sayed. Cairo is very good, so you can आप Cairo में जा सकते हैं. और एनसाम्स में लास्ट ईयर काफी बच्चे गए हैं, तो वहाँ इंडियन स्टूडेंट अभी ज्यादा है कंपेयर टू कायरो. तो कायरो में अभी कम बच्चे ही गए हैं, रादर बहुत ही कम बच्चे हैं. तो एनसाम्स में इंडियन स्टूडेंट अभी ज्यादा है. कायरो इज गुड, एनसाम्स इज इक्वली गुड. मंसूरा, अलेक्जेंड्रिया, देखिए बात क्या, आपके परसेंटेज अगर कम है तो वहां पर कायरो में आपका नहीं भी हो सकता, बिकॉज कायरो ऑलमोस्ट लाइक 70% से कम हो तो कायरो में चांसेस ही कम हो जाते हैं. सो इफ द स्टूडेंट डोंट हैव 70% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड दे आर वेरी गुड एट द एजुकेशन, तो दे आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन. सो दे डोंट टेक ऑल द स्टूडेंट to be admitted. See, Mashar, और एक मैं बात बताऊं, always choose a college which does not take admission of any Indian student based on their just class 12 marks. Like there are some colleges in some country, they want 80% in physics, chemistry, biology. Some want 90% in physics, chemistry, biology. Even in Bangladesh, there are some colleges in they want 90 plus in biology. Then only they can get admitted in that college. So this can help you to understand if a college has a like if a particular college or particular university is good, they will not take any student in their own campus without even checking their marks, or in any kind of something has to be tested, be it उनका एग्जाम लेकर के देखें या फिर उनके class 12 percentage. I am not saying that based on class 12 percentage only one can be judged, but at least there has to be some parameter. And that parameter, if there is no parameter, if there is a university, be it in Philippines, be it in Bangladesh, be it in Ukraine, be it in Russia, wherever it is, if a university or a college is ready to take admission of any student, even if a student has 90% in physics, chemistry, biology and 12 standard, they are getting admission in the college, and even a student with 51% or 50% is getting admission in the same college, then you can understand the college is only taking the admission. There is no standard to judge the student, or they are not doing any quality check before taking the student. So for them, number of seat, filling the seat is important. So you should avoid such university. If you really want to know, like, sir, how to know whether this particular college will take me or not, just call the same consultant with two numbers. Call him saying that you have 60%, and then call him, then, sir, I have 80%. So if you have 80%, 85%, then always go to a college where the benchmark is 70% and above. So what happens, you will be surrounded by good quality student. In terms of marks, there can be there can be exception of some good student who have good in education but not getting good marks in class 12. But there are these are rare cases. If somebody is above 80% or 90%, obviously they have done their study thoroughly. And if somebody is not getting that level of percentage and is in 50% range, they are not studying quite well. So it's a very basic way of judging a student. And if these things are not being considered at the time of admission by a university, be it in any part of the world, then you can be very sure that, okay, the college is just interested in money paid by the student, not interested in taking a quality student. Because
like the logic of conducting NEET exam, and why the government is pushing for NEET exam, because they want the good student to get good college, and that on NEET is the only, right now, the only way with which they are doing it. Then there are many people who can claim that even without getting good NEET score, they are good student. Yes, they are. I'm not saying, but these are some exception. But based on exception, you cannot define uh, decide the career of 16 lakh student who will be giving the NEET exam. So ये logic आपको समझना बहुत जरूरी है. मशर से मस्त बोले हैं. थैंक यू सो मच मशर. आप लोग का मस्त क्वेश्चन रहता है तो हमारा मस्त आंसर भी आता है. तो सर ग्रेजुएशन करने के बाद फिलीपींस जाने पर भी एनमेट एग्जाम देना पड़ेगा. सर ग्रेजुएशन अगर आप करके जाते हो, एनमेट का एग्जाम जैसे यहाँ पर नीट देना पड़ेगा ना, वहाँ पे एनमेट देना पड़ेगा. ये एनमेट का एग्जाम देना है. इस साल का एग्जामेशन को लेकर के बात हुई है, बट आई एम स्टिल नॉट गेटिंग नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑफ CHED. If you are getting that notice on the official website, not edited one, because their market में बहुत कुछ edit करके circulate हो जाते हैं. If you are getting that, please share with me also so that I can update myself also. See, I am not saying that I have all the knowledge of every country, every somewhere, but I try to like collect all this information and try to give it in short through this YouTube live, so that any student who are misguided can, after listening to me, they can do their own research in that particular line, in that particular field. Like right now today, what I am sharing with you, what new I've shared with you compared to last 4-5 weeks of my video. Today I have shared a new way of judging a good college. Just check with the college if a student of 50% can also be admitted in the same university, and if a student of 90% can also be admitted in the university. Obviously the university or the college is only considered about the money of the money they will be earning from the tuition fees. If a university, like I said, the Cairo University, they will not be taking any student below 70%. Obviously, that makes them good college, good university. In Bangladesh, there are some colleges they don't even consider anybody, even if they are ready to pay extra fees. Then also they will be not considered if they have less than 70%. Colleges like Anwar Khan, colleges like Dhaka National, colleges like Bangladesh Medical, Holy Family, these are the colleges they don't even consider any student below 80%. There can be exception, one or two, because these are like private medical colleges, so there can be one or two exception, but this is how they treat the student. Like they want only good quality student in their campus, because they have limited number of seats. They don't have unlimited seats like so-called big universities of many country, where they are admitting students in big number. So based on these things, you have to decide about your college, and based on this, you have to decide about your country selection. So this can also be one way to check whether the college or country you have selected is good or not. So coming back to the topic of this video, can NEET 2020 be exempted? Yes, there can be. There are chances. There was high chance just before I read the yesterday's verdict of Supreme Court, that there were high chance. But after reading yesterday's verdict, and and the government is yet to give any information about the exemption. So there can be, if these two instances are considered, there can be chance that it is not exempted, because if most of the country the student have to reach by September to, if they want to do their medical admission. But right now the flights are not open, the visa is not open, and logic of government can be, if you are ready, if you can travel to a country sitting in a flight, which is more riskier if you are traveling, and then you can go to that country for admission, and you are seeking an exemption of NEET because you feel by giving NEET you can be like infected with corona. So these logics is not working. So the logic for exemption can only be given by the universities of such country, where these universities must request the Foreign Ministry of India or the Indian Embassy for the exemption, because they have a particular deadline. Because right now most of the university have not come up with their deadline in a particular way. Whether these deadlines of admission, which it was earlier, wo consider kar rahe hain, say the same deadline will be there, or the deadline will change as per the new current situation because of the pandemic situation. So ये सब चीजों को देखना चाहिए. So you have been to Egypt. What about safety? Ramesh Raja, safety. Egypt is a tourist destination. So any country where tourists visit regularly has to be safe, because
a big part of economy of that country based on or depends upon the tourism of the country. So obviously the police, the authority, the administration of the country is very much concerned about the tourist, and when our students are going there, they're also a foreigner like the tourist. So as the country knows how to handle uh, international tourists, obviously the country is safe. So in that logic you can also understand कि आप safety कैसे हो सकती है. So this can be a logic to understand that the country is safe. Moreover, the safety of the country is there because Egypt, the people from Egypt are very much more like what to say, they're very hospitable, they are very good. Yeah, except few one or two instances where I met some bad people also there, but it was not related to education or something, but there are good people, there are bad people everywhere. Every tourist destination there are some taxi driver who will be cheating somebody, there will be some people who will be charging extra money. These things happens, but in overall situation Egypt is a country where students from US, UK, Europe, even India are going and studying, and they are very happy, and inside the campus everything is so secured and safe. You cannot even believe it's like an international university. That is the reason why the university has ranked in top 250, despite the country not being in like one of the best country to study, because Egypt is not the country you normally consider when you think about studying abroad. But Egypt is getting good university ranking, more ranking than even top universities of India. So that proves that they have considered the safety and quality of education. That's why they are getting a good ranking in their terms of their यूनिवर्सिटी रैंक. आप ही एक ऐसा कंसल्टेंट है जो राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं. मशर ऐसा नहीं है. मशर, there are many consultant who are giving good information. The problem is many good consultants are not available on YouTube to give the right information. Everybody is not like so camera friendly. I am also not very camera friendly, but many people are not very they don't feel comfortable speaking in front of camera because there are many truths they don't want to tell you in front of cameras so that everybody can see. There are people who give you good information, but they want to call you in their office and then only give you good information. So there are many good consultants. It's not like everybody is bad or everybody wants you to send you to country just to make money. But मशर, आप बहुत सारे ऐसे colleges हैं, बहुत सारे ऐसे countries हैं जिनके जिनको promote करते consultant and they are giving you right information. The problem is not that don't think कि जो ये particular country को promote करते हैं they are only good consultant. Every country has good university, good college. The problem with many consultant is that they are not giving the true information. So and आपकी भी गलती है as a parent or as a student, you are not asking the right question, that और वहीं पर वो बच के निकल जाते हैं. Because I'm not saying that many consultants lie, but they hide the true information. So आप उसको छिपाने मत दे, then you are safe. So that is the whole reason why I am making this video, so that if you are watching my video, you know what to ask. If you know what to ask from your consultant, then obviously he cannot hide you anything. It's not like कि आपको मेरा वीडियो देखना है तो मेरे पास ही एडमिशन के लिए आना है. There are many good consultant in your own state. We are also available in almost everywhere in India. We have student from Kashmir to Kanyakumari, and we have student from, have covered all over the India in terms of our seminar or our education fair or doing YouTube live. So we have done admissions of students from all over India. But there are many people who will be trusting somebody else, but without asking this question, which I'm like telling all the parents or the student to ask to their respective consultant, don't choose any college. Because in case you are not asking this question, there is high chance that you will be misguided. If you're not asking just don't check about the ranking of the university. If a university is ranked, like right now I said, Cairo is a top ranked university. So obviously Cairo University is not taking student of 50%. If you have physics, chemistry, biology 50-55%, you will not be admitted in Cairo Medical University, irrespective of what you do. Even if you are ready to pay double the fees, you will not be admitted. It's as simple as that. So that makes a university a good university. But if you're choosing so-called, the ranking of the university is very good, but that university is ready to take admission of 80% wala student and also 50% wala student. And if they are not even ready to give scholarship to this 80-85% wala student, it means for them it's all about money. They are not interested in the quality of the student. And they have huge number of seats, no teacher-student ratio, no capable infrastructure to teach so big number of students. So you have to choose college accordingly, whether the college is ready to select you. हमेशा आपको ही अगर selection का मौका मिल जाता है, it means that if you are being selected easily in one college, obviously there is something
Something is there in that college which is not correct if everybody is able to get the access to that particular college. So you have to understand, if the college is also ready to select you and you are able to qualify, then you feel that yes, you got something, you achieved something which others can't. So this logic has to be there, because this sense of achievement, even if it is abroad, like even if it is abroad, it should not be like abroad है तो कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले ले किसी भी कॉलेज में. कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना, to judge the capability of the student, to judge the quality of the student. If there is no quality check of the student, why NEET is there? And many people who are seeking NEET exemption, see, I was totally against NEET exemption just 3 months back. No, NEET should be there, because what happens, that if the NEET is not there, there are many big number of students are being brainwashed, saying that you can be a big doctor, you can be a good doctor, and sent to some colleges in other country jahan par there's no basic infrastructure, basic facility to teach medical student. They are going in 2000 1500 in one university. हजार बच्चे एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज में सिलेक्शन हो जा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग देयर एंड स्टडीइंग मेडिसिन. आई डोंट नो व्हाट दे आर. इट्स अ बिग कोचिंग सेंटर. इंडिया से 1-2 टीचर जा रहे हैं टीचिंग एफएमजी फ्रॉम द डे 1. देयर इज नो बेसिक medical education which is required to be actually a good doctor. Even after passing FMG, it doesn't mean that you passed FMG you become a good doctor. Passing FMG is like passing NEET. If you are getting NEET, then you get into a medical college. Then you have to study. So similarly, if you are passing FMG, you become a doctor. Then you have to go and practice. Then you become a good doctor. So just don't consider FMG everything. अभी हमेशा बताता हूँ कि बांग्लादेश का FMG पासिंग अच्छा है, फिलीपींस का FMG पासिंग अच्छा है, but it doesn't mean कि FMG passing percentage should be the only criteria to check the quality of the check the quality of the university or the college. You have to take the mix of the things. Mix करना पड़ता है कि ये भी थोड़ा अच्छा हो, वो भी थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा सब कुछ अच्छा होना बहुत जरूरी है. सर मॉरिशस खन्ना मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर प्लीज. फैज आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं उसका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपको ऑफिशियल लेटर हेड में ही भेज दूंगा. यहाँ पर तो मैं ऐसे भेज नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा. आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें फैज, आपको मैं भेज देता हूँ. ऐसे अप्रोक्सीमेटली फीस 40 लाख के आसपास आता है और अन्ना मेडिकल कॉलेज का, तो ओवरऑल सब कुछ मिला के. सो जो लोग लाइव हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. तो नीट एग्जामिशन पे मैं अगर फिर से रिपीट करूं, नीट एग्जामिशन के चांसेस तो अभी भी हैं. विद इन 1 वीक एवरीथिंग विल बी क्लियर. एंड बट नीट एग्जामिशन को मान करके कहीं पे एडमिशन ना ले और नीट का प्रिपरेशन करते रहें. वो एग्जामिशन हो जाएगा, इसलिए आप अब्रॉड चले जाएंगे, इसलिए प्रिपरेशन करना छोड़ ना दें. जस्ट कल का डिसीजन इज इनफ दैट कि आपको मेडिकल का एजुकेशन मतलब नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. जो लोग ऑलरेडी एडमिशन लेकर के किसी यूनिवर्सिटीज में पैसा दे करके बैठ गए, फॉर देम आल्सो यस यू हैव बुक्ड द कॉलेज, इट्स ओके, यू हैव गिवन सम मनी टू ब्लॉक अ सीट, इट्स ओके, बट इट डजंट मीन कि आप नीट का प्रिपरेशन छोड़ देंगे एंड यू आर थिंकिंग ओके आई एम बिकम डॉक्टर, फेसबुक पे जाके नाम चेंज कर दिया डॉक्टर दिस. सो दिस डजंट नॉट मेक यू डॉक्टर. डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता कि आप पैसे दिए और आपका फेसबुक पे नाम डॉक्टर हो जाने से आप एक्चुअल डॉक्टर बन जाते हैं. मैं जानता हूँ ऐसे कई स्टूडेंट्स को जो अभी तक फेसबुक में 5 साल से डॉक्टर है, बट दे आर येट टू पास एफएमजी एग्जाम, और वहां से कंट्री से निकले और दे आर येट टू पास एफएमजी एग्जाम, जस्ट वो फेसबुक वाले डॉक्टर बन के बैठे हैं. डोंट बी अ फेसबुक डॉक्टर, बी अ रियल डॉक्टर. फॉर टू बी अ रियल डॉक्टर शुड नॉट फियर एनी एग्जाम, बी इट नीट और बी इट एनीथिंग एल्स. बिकॉज नीट एग्जामिशन हो भी गया तो क्या आप अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे, फिर से पेंडेमिक रहेगा, आप चाहेंगे फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी एमबीबीएस का एक्सटेम्प्ट हो जाए, थर्ड सेकंड ईयर का एग्जाम हो जाए, इस तरीके से हर एग्जाम में एक्सटेम्प्ट हो जाए, फ्री में डिग्री मिल जाए. तो दिस कैन नॉट बी डन. लाइक दिस एग्जामिनेशन कैन बी डन for one time based on the current situation that many countries, many universities in many countries, they have deadline for admission, but these countries should come out officially if at all you are applying. I am asking all this consultant, like see, I promote such colleges where the deadline for admission is almost at the end of November. So for at least until unless the NEET is conducted after November, I will not be asking these universities or college or the embassy from that country to write a letter to Indian government. So I'm not pushing it. But such people who are pushing for NEET exemption, I will request them. So why don't you call or request the universities you are promoting to come up with the deadline of admission, so that letter, that particular document can help in our student to
push their case or push the case to Supreme Court that why it should be exempted. It cannot be just one or two exceptional information. शायद उज्बेकिस्तान को लेकर के there has been a PIL कि it should be exempted because the admission in Uzbekistan is going on. So there just one case पे तो होगा नहीं ना. At least few more countries should come up if at all they have deadline for admission. Sir, Egyptian University में फीस फर्स्ट ईयर में 7,500 प्लीज एक्सप्लेन. तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए आप, मैं समझा नहीं. फीस तो ये है, मतलब ये तो क्लियर फीस है. फीस स्ट्रक्चर मैंने शेयर भी किया है. आप नहीं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर भेज देता हूँ. दिस इज द फीस स्ट्रक्चर यू हैव टू पे. और इसमें एक्सप्लेन करने का मैं समझ नहीं पाया व्हाट टू एक्सप्लेन, लाइक व्हाई इट इज सो एंड व्हाई इट इज मोर एंड व्हाट इज लेस. ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा मोहम्मद रमीज राजा जी, क्योंकि फीस तो फीस है. अब जो है उन्होंने डिसाइड किया, इट इज फॉर ऑल एवरीबडी. मॉरिशस वर्सेस बांग्लादेश थोड़ा बताएं. फैज मॉरिशस वर्सेस बांग्लादेश. देखिए मॉरिशस का एमसीए पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है. वहां पर बहुत कम मेडिकल कॉलेज है, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो काफी वेल मेंटेन्ड है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है. इंडियन डॉक्टर्स भी वहां पर काफी पढ़ाते हैं. पढ़ाई काफी अच्छी है. और एक इंडिया से लिंक बना हुआ है, इंडिया से सिलेबस, इंडिया से इंडियन और मॉरिशस का बहुत ही अच्छा रिलेशन है. तो ये सब चीजों से मॉरिशस का एजुकेशन काफी अच्छा, बट इट्स कॉस्टली. मॉरिशस इज अ वेरी कॉस्टली कंट्री. इट्स अ स्मॉल कंट्री. इट्स मतलब मैं गया हूँ मॉरिशस, मतलब आप एक एंड ऑफ कंट्री से दूसरे एंड आप 4 घंटे में जा सकते हैं. 4 घंटा में नहीं, 2 घंटे में आप वन एंड ऑफ द कंट्री टू अनदर एंड ऑफ द कंट्री आप जा सकते हैं. So this is how big Mauritius as a country is. It's only beach in 3 areas and it's a tourist destination. And being tourist destination, everything is imported. सब कुछ वहाँ पर इम्पोर्ट होता है. वहाँ पर मैंने पेट्रोल से लेकर के, फूड से लेकर के, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. पोटैटो से लेकर एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. सो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई. So that is the biggest problem of Mauritius. Living in Mauritius is very costly. तो आप एज अ स्टूडेंट आपका फीस वगैरह अगर 40 लाख के आसपास आता है, रहना खाना आना जाना सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 45-50 लाख तक चला जाता है मॉरिशस का ओवरऑल खर्चा. एंड फ्लाइट फेयर भी काफी हाई है. मॉरिशस पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते रहते हैं. कहा जाता है इट्स अ हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज द लॉजिक विथ विच मॉरिशस को जाना जाता है. इट्स इन अफ्रीका. मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं. इट्स एन अफ्रीकन continent, but country is good. Colleges are very good and MCA passing rate is very high. Rather number 1 पे अगर सच्चे बने, पता नहीं कुछ कंसल्टेंट कल बोल रहे थे 50% highest MCA passing percentage is from Philippines, but it's not true. The highest percentage passing percentage is from Mauritius, then Philippines and Bangladesh comes up. And you don't have to compare only 1 year. एक साल में किसी कंट्री का ज्यादा, दूसरे साल में किसी का कम, ये तो होता रहेगा. If you consider from 2018 to 2019, then overall you will see Mauritius as one of the rather number 1 country for in terms of FMG passing percentage. But the cost of education is very high, almost 50 lakhs considering overall expenses. 50 लाख से कम तो नहीं होता है. सर सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैसा है? सर मुझे आइडिया नहीं है सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं नहीं बोल सकता और ना मैं कमेंट करना चाहूंगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊं, तो मुझे पहले टाइम दीजिए, मैं रिसर्च करता हूं और तो मैं इसके बारे में बता पाऊंगा. बिकॉज राइट नाउ आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. और जो मॉरिशस और बांग्लादेश का अगर कंपैरिजन करें, बांग्लादेश का एडवांटेज है पास में, आप बस पकड़ के चले जाइए, आप ट्रेन पकड़ के चले जाइए, और वहां पर सारे इंडियन फूड के ब्रांड अवेलेबल है. अमूल तो स्पॉन्सर तक कर रहा है, सहारा स्पॉन्सर तक कर रहे हैं उनकी क्रिकेट टीम को. सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्लोजनेस वी हैव विद दिस कंट्री. और वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस लोग यहाँ के जो रीजनल फिल्म्स है उसमें एक्टिंग भी करते हैं. यहाँ के डायरेक्टर्स वहाँ के मूवीज को डायरेक्ट करते हैं. सो दिस इज द लेवल ऑफ बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ कल्चर और एक्टिविटीज दिस टू कंट्रीज आर डूइंग. और अभी तो सबसे closest neighboring countries में बांग्लादेश ही हैं. We have our own office, so we help our student and we know from their feedback that they are very satisfied. I have like मैंने कई students का admission कराया in Bangladesh who went to some other countries. वहाँ 2-3 महीना रहने के बाद जब नहीं कर पाए तब वापस आकर के in the month of November, in the month of October they have taken admission. In the month of August they went to that country. 2 महीना वहाँ पर पढ़े और उनको सच्चाई पता चला, they came back. So these things are there. And culturally थोड़ा बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. बांग्लादेश इज इट्स लाइक इंडिया, इट्स लाइक वेस्ट बंगाल. सो वहां पर आप जाओगे, अगर वेस्ट बंगाल एक कोलकाता में आपने रहा है, तो रहना खाना पीना ओवरऑल एक्टिविटी सब कुछ काफी सिमिलर है. सो इफ यू कैन एडजस्ट इजीली फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, then you can definitely adjust in Bangladesh without any even 1% of further adjustment.
सर इजिप्शियन टीचर स्टूडेंट रेशियो वीडियो कब आएगा? मैं इसका वीडियो बना दूंगा रमेश भाई, आपका मैं पूरा इस पे थोड़ा सा प्रॉपर मैं उसका पीपीटी बना करके कर दूंगा। ऐसे टीचर स्टूडेंट रेशियो काफी हाई है, मैं इस पे पूरा वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसका सिलेबस को लेकर के तो मैंने बनाया था, आपने टीचर स्टूडेंट रेशियो और कुछ भी और भी आपने लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा था, मैं सब कुछ बना दूंगा। ऐसे आप जाइए कायरो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करिए, वहीं पर आपको टीचर्स कितने सारे हैं वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो देयर इज नथिंग मच आई हैव टू ऐड, बट या डेफिनेटली एज यू हैव रिक्वेस्टेड मी आई विल डेफिनेटली लाइक गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, और एनीथिंग एल्स अगर आप लोग ऑनलाइन हो? वैसे वीडियो तो पूरा नीट एग्जामिशन के ऊपर था, बट क्वेश्चन तो हर तरह के आते हैं और सबके आंसर ही हम देते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत कुछ मुझे बताने को नहीं है। बट या फाइनली अगर मैं एक चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल दिस पीपल, ऑल दोस पीपल, all the students who are looking forward for exemption, sorry, who are looking forward to give NEET, must request few things to your government। आप अपने गवर्नमेंट से कुछ चीजों का रिक्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि नीट का सॉरी देयर वाज सम इशू आई थिंक इन द इंटरनेट, सॉरी। सो मैं जो कंटिन्यू कर रहा था मैं बोलूंगा कि दोज पीपल स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव नीट एग्जाम, अगर गवर्नमेंट ने तो एग्जामिशन दिया नहीं है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नीट सेंटर को डिमांड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि नीट एग्जाम के देने के चक्कर में हमारे बच्चों का तबीयत खराब हो जाए और वो इन्फेक्टेड हो जाए, बिकॉज मानसून सीजन है, अभी अभी डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड करने के चांसेस हैं, एंड इंडिया में अभी भी कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये राइट टाइम तो नहीं था एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज आई थॉट कि एटलीस्ट जब कर्व नीचे की तरफ आए तब एग्जाम कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम कंट्रीज में अब कोरोना कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं, केसेस निकल रहे हैं बट पहले से कम, बट इंडिया में अभी भी बढ़े जा रहे हैं। मैक्सिमम बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टेट में अभी भी केसेस बढ़े जा रहे हैं। सो द थिंग इज we have to demand something from our government, if they or NT or whoever the responsible authority is there, कि हमारा अगर एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हो, you should give us more center and there should be one time more updation of new center should be possible। अभी अगर नए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पर्टिकुलर एक सेंटर के बारे में को फिल अप करके रखा था, बट नाउ that center can be far away and the transport facility is yet to be restored, metro services in many states are yet to be restored, so how the student will travel? Will there be special buses or special transport arrangement for all this student? कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर 5 मई को ही नीट हो जाता तो बेटर था, पूरा कंट्री लॉक रहता बट हमारे स्टूडेंट बाहर निकल के एग्जाम देके आ जाते हैं। इट कुड हैव बीन मच बेटर, मच सेफर एंड मच इजियर फॉर पीपल, द स्टूडेंट टू गिव द एग्जाम, बट उस समय एक अलग तरीके की पैनिक चल रही थी एंड अभी एक अलग है, अचानक से सब कुछ ओपन हो चुका है। सो आई प्रिफर कि अगर उस दिन अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के दिन लॉकडाउन करके सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस किया जाए तो दैट कैन आल्सो बी गुड थिंग, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन बिकॉज इट लाइक बहुत इकोनॉमी को फर्क पड़ता है एक दिन का बंद होने पे। So what as a student, as a parent, what we can do or what I will be doing, I will be demanding all like the government, मैं अपने से अलग तरफ से मेल करूंगा या फिर ट्वीट करूंगा कि there should be some more center, there will be one time
chance of for the student so that they can update their exam center. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम सेंटर वो अगर चेंज करना चाहें, मान लीजिए वो कहीं से कहीं मूव किए एंड दे अगेन वांट टू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सेंटर, एंड ये जो सोशल डिस्टेंसिंग इसको इंश्योर कराना पड़ेगा। इसे बोलने से होगा नहीं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बट ये मेंटेन करवाना भी गवर्नमेंट, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उस एग्जाम सेंटर्स को उस हिसाब से फाइन भी करना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो उनको इस टाइप के कुछ गाइडलाइंस आने चाहिए। और सैनिटाइजर्स हो या फिर मास्क हो, ये सब अवेलेबल हो सेंटर पे। ऐसा नहीं हो कि किसी पर्टिकुलर बच्चे ने एक पर्टिकुलर टाइप का मास्क पहन के आए तो उन्हें एंट्री नहीं मिली एग्जाम देने में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मास्क और ये सैनिटाइजर वगैरह भी अवेलेबल होने चाहिए एट द सेंटर। एंड इन केस समबडी हैज फीवर, बिकॉज फीवर डिटेक्शन आप चेक करते हो बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर बहुत रीजन से हाई हो सकता है, अगर ऐसा ही होता कि बॉडी टेम्परेचर से कोरोना टेस्ट चेक हो जाता तो आज शायद कोरोना स्प्रेड ही नहीं करता किसी कंट्री में, क्योंकि हर कोरोना स्प्रेड होने से बहुत पहले से टेम्परेचर चेक हो रही है थ्रू ऑल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, बट दैट डिडंट स्टॉप एनी कंट्री टू गेट द कोरोना इन देयर पर्टिकुलर कंट्री। तो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर से तो कोरोना टेस्ट होता नहीं है। तो फिर सिर्फ बॉडी टेम्परेचर अगर किसी का हाई है तो उनको अगर एग्जाम भी ना देने दिया जाए वो भी तो गलत होगा ना। तो फिर उसको कैसे जज करेंगे कि अगर किसी का तबीयत खराब है, तबीयत खराब होना एंड कोरोना होना दो अलग चीज है। इन्फेक्शन अगर नहीं स्प्रेड हो सकता और उसका सिर्फ फीवर है, बेसिक फीवर है, बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ मलेरिया, बिकॉज ऑफ अदर रीजन, तो फीवर इज जस्ट अ सिम्टम which can be due to and many things। फीवर अगर आप जब डॉक्टर बनोगे आप सबको पता चलेगा फीवर इज जस्ट क्या बोलते हैं, एक सिम्टम है जिससे पता चलता है देयर इज समथिंग नॉट राइट इन द बॉडी एंड देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर हैविंग फीवर। सो तो सिर्फ फीवर कैन बी ओनली, सिर्फ उसी के बेसिस पे आप किसी बच्चे को अगर नीट में एग्जाम में ना बैठने दे बिकॉज योर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, तो ये भी तो सही नहीं है। और ये भी सही नहीं होगा कि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर इस रीजन से हाई है बिकॉज ही हैज कोरोना एंड यू आर लेटिंग हिम सिट इन द एग्जाम, सो हाउ विल यू डिटेक्ट दैट? विल देयर बी टेस्टिंग किट, ऑन स्पॉट किट, जिससे हाथों हाथ पता चल सके 10-15 मिनट में कि अगर किसी को फीवर है तो उनका टेस्ट किया जाए? ये सब चीजें क्या पॉसिबल होगी? या असिम्टोमेटिक अगर कोई है तो उनसे ना फैले? ये सब चीजों पे थोड़ा गवर्नमेंट को क्लियर होकर आना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे आर नॉट वेरी क्लियर देन हाउ आवर स्टूडेंट विल सर्वाइव। एंड मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब जब भी मैं नीट का एग्जाम होता है हर सेंटर में मैं जब भी जाता हूँ उस केसेस में मैं देखा हूँ कि जो एग्जाम है, एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर भरे रहते हैं पेरेंट्स की पूरी भीड़ लगी रहती है। तो अब अगर पेरेंट्स वहां पर भरे हुए हैं तो उस केस में ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसे मेंटेन की जाएंगे? क्या पेरेंट्स को वहां पर नहीं जाना अलाउ किया जाए, या सिर्फ बच्चे अगर अकेले जाएंगे तो क्या वो भी कितना पॉसिबल रहेगा? ये सारी चीजों को समझना, मतलब इस सब चीजों पे गवर्नमेंट को क्लियर होकर आना। सर मॉरिशस मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट मॉरिशस मेडिकल कॉलेज बोल के कोई कॉलेज नहीं है फैज, वहाँ पर एसएसआर मेडिकल कॉलेज है और आपका अन्ना मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बट कंपेरेटिवली पेशेंट्स आते हैं बिकॉज ओनली 2 or 3 मेडिकल कॉलेज देयर इन द होल कंट्री। तो जो भी आते हैं वहीं पर आते हैं। तो इन दैट लॉजिक इन टर्म्स ऑफ कंट्री, इन होल कंट्री में अगर 2 या 3 मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कम भी पॉपुलेशन तभी पेशेंट आते हैं। हाँ, डिजीज पैटर्न सारे आपको चेक करने नहीं मिलेंगे। जैसे इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लॉजिक होता है कि एवरी हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट 600 ओपीडी विजिट एवरी डे। तो ओपीडी विजिट वहां पर उतनी होती है ऐसा नहीं है, तो ओपीडी विजिट तो ऑब्वियसली कम होगी। तो पेशेंट फ्लो इंडिया जैसा तो नहीं होगा। इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में तो एक दिन में 10-10, 15-15 हजार पेशेंट को भी देखा जाता है। तो वो तरीका से तो आप नहीं जज कर सकते, उस तरीके से आप जज करना मुश्किल है। बट ओवरऑल इट्स नॉट बैड, एटलीस्ट एजुकेशनल एक्सपोजर इज वेरी गुड। मैं कोशिश करूंगा, मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मॉरिशस से अपना मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट किया है, आई विल आस्क हर इफ शी कैन कम डाउन ऑन व्हाट्सएप एंड शेयर हर ओन एक्सपीरियंस कि उन्होंने एजुकेशन उनका कैसा रहा, उनका कैसा कैसा पढ़ाई रहा, तो उन लौटने के बाद उनका यहाँ पे एडजस्टमेंट कितना ईजी रहा। इफ शी कैन explain all these things to the student directly, it will be of great help for many students. Let me see, or else I will ask the details from her. आपके जो questions है वो सब आप एक साथ put up करिए, मुझे इस नंबर पे WhatsApp कर दीजिए। I will definitely put all this question to her and get back to you, because as a student जो उन्होंने face किया in 5 year, it will be much clear if she explain or if he or she gives the information I explain it to you, because हम लोग जो information basic student के feedback पे करते हैं, but मॉरिशस में बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं टू स्टडी मेडिसिन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड।
सो दिस इज द थिंग एंड जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कॉस्ट आप बोलते हैं ज्यादा, वहाँ तो फीस कम ही दिख रही है। देखिए जब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आप कैलकुलेट करते हैं व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड, द कॉस्ट ऑफ ओनली ट्यूशन फीस इज नॉट इम्पोर्टेंट। देयर आर मेनी कंट्री। जी एमसीए पास आउट है जी, हाँ, उन्होंने एमसीए पास कर लिया 2 साल पहले, उन्होंने एमसीए पास कर लिया। तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फैज, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली द ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस यू आर गिविंग, इट also include if there is any kind of visa renewal, it also includes if there is any kind of translation of document, it also includes if you are paying for insurance or residence permit, the cost also includes the travel cost। अगर आप साल में एक बार आते हैं and what is the cost of like flight when you're coming up and coming and going there once in a year or twice in a year, so all this cost you have to calculate, then only you can come up with actual cost of your education, because many country the actual fees comes around 20 lakhs or 18 lakhs only, but if you calculate the 5 year or 6 year flight fare, it goes again back to 25 to 26 lakh. If you calculate the basic other cost like the renewal of visa, you consider the visa sorry insurance cost, because many country insurance is mandatory, so these things will add up to that cost। so इस तरीके कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे ना, सस्ते से भी सस्ती कंट्री अगर आप जाओगे, किर्गिस्तान जैसे बोलते हैं सबसे सस्ती कंट्री में, वहां पर भी आपको 24-25 lakhs पड़ ही जाते हैं इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड ऑल। NEET exemption, NEET exemption, this is the whole video, the title is the NEET exemption। The thing is NEET exemption is very like less chances are there for NEET exemption after yesterday's verdict that the exam will go as per time। so आप NEET exemption के भरोसे preparation को stop करके मत बैठिए, continue to prepare for NEET, don't stop your preparation। 25 days are there, अपने subject को 8 days को divide करिए, या फिर उस 8 days में अपने subject को divide करके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 8-25 दिन में पढ़ाई कर लें। ऑब्वियसली आपने पढ़ाई किया हुआ है, आपने कोचिंग पूरा कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक तो स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन आपने फरवरी तक तो पढ़ाई की है, तो आपका रिवीजन में भी स्टॉप हुआ हो तो रिवीजन पे कंटिन्यू करिए। बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं कर रहे थे, सो दे शुड अगेन गो बैक फॉर दिस क्रैश कोर्स। अगर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, सो डोंट wait for NEET exemption। If it happens, it will be good for many students who are looking forward to go abroad, but like you should not prepare for NEET exemption, you should prepare for NEET, and if it is exempted you should be happy। and even if it is exempted and you are going after the NEET exam, you should definitely give NEET exam, because this is a very primary exam, you will be able to judge what where you are। और अगर खुद को ही आप जज नहीं करते और एग्जाम से डरते हैं, तो फिर तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो इट्स नॉट गुड, okay, because medical education without exam is not possible। प्लीज सर आप अपने फ्रेंड को लाइव लाएं और फिर कांटेक्ट करें। फैज ओके, आई विल डेफिनेटली आस्क somebody to come and but it will better if you ask the question, because everybody is not so comfortable on YouTube live। it took me a lot of time to like understand like कि कैसे YouTube लाइव में, क्योंकि बहुत एक दिमाग में रहती है, यू नीड, क्योंकि आपके कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैनी पीपल डज फंबल, मैं भी अभी फंबल करता हूँ, सो मेनी पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन YouTube लाइव टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। so it will be better if you put all your question in WhatsApp or in mail or in our website। यहाँ पर ही आप सारे क्वेश्चन दे दें, and then accordingly it will be answered। I will answer on their behalf if needed, because everybody is not so comfortable coming on YouTube live, and it's not their duty। I am a professional, I am working to recruit student, I am giving students some guidance, so मेरा ये तो काम ही है, मेरा profession है, I have to learn this to do all this YouTube live and tell all the information, give all the information which I acquire from different sources। but ये तो सब उनके काम नहीं है, तो it may happen or it may not, so but don't wait for somebody to come to YouTube live and give you all the information। you give all your question and I will try to get all the answer, and if it does happen I will definitely inform you। there's some YouTube live like that। What is deadline for MBBS abroad Bangladesh? MBBS abroad, every country have their own deadline। 8989 is your name, I don't know what is your name। so every country has their own deadline, and there are students who are going to countries like Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, and other country, they are looking forward for exemption because their deadline is almost in the month of October and September, तो आ ही गए, तो वो कंट्रीज अपने अपने डेडलाइन पे कर रहे हैं, बट बांग्लादेश का डेडलाइन ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर पे आता है, समटाइम्स इट एक्सटेंड टू दिसंबर। एंड if the condition in India is not good, so good, Bangladesh में कोरोना cases much less, almost 10% of total cases in India, it's less than 10% of total cases in India।
तो वहां पर केसेस अभी बहुत कम है, बट या यू नेवर नो, लाइक ऐसा नहीं है कि अभी केस कम है इसलिए आप उस कंट्री में चले जाएं, क्योंकि कहीं भी केस घट भी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट until is a vaccine or some good medicine, more better medicines are coming up, it will be difficult for travel, and travel advisories are very strict. अगर आप कहीं जाते हो क्वारंटाइन में 15 दिन, उस बीच में अगर आपका कहीं किसी कारण से पॉजिटिव हो गया, आपको फिर वापस आना है, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ ऑलमोस्ट ह्यूज मनी, दो साइड का ट्रैवल कॉस्ट, एंड if the fees is given, they might not able to take you admitted, get you admitted in that particular college in that year or in that session. तो इतना रिस्क लेकर के अब्रॉड अभी ट्रैवल करना तो सही नहीं रहेगा। बट एडमिशन के बाद कुछ कंट्रीज बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे, 1-2 महीने के ऑनलाइन क्लासेस तो फिर भी पॉसिबल है, बट मेडिकल एजुकेशन कैन नॉट बी डन ऑन ऑनलाइन क्लास। So this is very, like I cannot understand how the medical, at least the beginning of the college cannot be online. So this is because आप जब क्लासेस करने लगते हो एंड यू गेट टू नो द व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू, तो आप ये कोचिंग नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्कूल में तो पढ़ाई की और अभी कोचिंग में आप रिवीजन कर रहे हो, तो ऑनलाइन रिवीजन इज पॉसिबल, बट ऑनलाइन द होल सब्जेक्ट को जीरो से पढ़ना ऑनलाइन, it might not be possible for many student, and every student is not so capable. तो मेडिकल एडमिशन अब्रॉड के लिए भी जो करते हैं वो गांव-गांव से आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, बिकॉज एवरीबडी हु कैन, जो अगर अफोर्ड ही कर पाते हैं तो फिर इंडिया में नहीं ले लेते एडमिशन। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लोन ले रहे हो, इसलिए तो आप जा रहे हो अब्रॉड। सो देयर आर मेनी केसेस वेयर स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इंटरनेट इन देयर ओन विलेज, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी या फिर नेटवर्क इतना स्मूथ नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर पाओ। तो ये सब भी समझना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत सारे गाँव में मैं जानता हूँ जहाँ पे जहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं, पर उनके गाँव में अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी अच्छी से नहीं है, इतनी स्मूथ नहीं है। तो कैसे होगी? अभी भी JNK, अगर कश्मीर के बच्चों को देखा जाए तो वहां पर अभी भी इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया गया, मतलब 4G लेवल पे, तो वहां पर तो इंटरनेट स्मूथली चलेगा ही नहीं, तो क्या वहां के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो किसी भी स्टेट का हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, कहीं भी आप बच्चे पढ़ रहे हो, या नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगहों पर इंटरनेट रिस्टोर नहीं, तो क्या वहां पर बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा? ये कुछ पार्ट ऑफ सिटीज के जो बच्चे, उन्हीं को सारा फैसिलिटीज मिले, उनको ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट टू बेस्ट मिले, बट वहां के बच्चों को ना मिले। दिस कैन नॉट बी डन। वी ऑल आर इंडियन एंड वी शुड कंसिडर द होल पर्सपेक्टिव। यही रीजन है कि नीट एग्जामिशन या नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के भी पिटीशन फाइल की गई कि इंडिया में भी बहुत पार्ट ऑफ कंट्री में बाढ़ आए हुए हैं, फ्लड है, बहुत सारे अदर इश्यूज है। मई मंथ में उतना नहीं होता है, तो मई जून तक बहुत ज्यादा इजी था कंडक्ट करना, बट अभी काफी मुश्किल होते जा रहा है। But hope like government will come up with proper concrete like guidelines to conduct the NEET so that the disease is not spreading, because वो भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि नीट सेंटर में गया और 10 बच्चों को कोरोना हो गया और उससे लौट आए। सो दिस विल क्रिएट अनदर पैनिक, बिकॉज इन बच्चों को जब घर आना है तो घर में भी वो स्प्रेड हो सकता है, एंड इट कैन बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। सो दिस थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। सर मॉरिशस में रियल बॉडी प्रैक्टिस के लिए मिलता है प्लास्टिक बॉडीज लाइक रशिया यूक्रेन? मॉरिशस में रियल बॉडी मिलती है, प्लास्टिक बॉडीज रशिया यूक्रेन में वो आप क्या बोलते हैं, सिमुलेशन लैब्स होती हैं जिसमें करवाई जाती हैं। देखिए प्लास्टिक बॉडीज और रियल बॉडी में आपको एक खुल के बताऊं, रियल बॉडी एक कैडावर होती है। कैडावर तो आप मरा हुआ बॉडी तो हर जगह ही मिलता है, हर कंट्री में हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, इंडिया हो, मॉरिशस हो, हर जगह ही एक डेड बॉडी जिसपे आप पढ़ना चाहते हो इट्स अवेलेबल इजिली। बट रियल बॉडी का मतलब वो रियल से ये नहीं होता, रियल डेड बॉडी नहीं होता, रियल पेशेंट्स आपको रशिया यूक्रेन में नहीं मिल सकते, या ऐसी कहीं कंट्री में नहीं मिल सकते जहां पर आप अलग दिखते हो। बिकॉज जस्ट इमेजिन, मतलब मैं अपने एक क्वेश्चन, मैं अपना एक इमेजिनेशन शेयर करता हूँ कि अगर कोई अफ्रीका से आता है इंडिया में पढ़ने के लिए और वो सेकंड थर्ड ईयर में इंजेक्शन प्रैक्टिस करना चाहता है, विल यू अलाउ, इफ दे आर नॉट लुकिंग सिमिलर? आप उसको, एक रेसिज्म अंदर में आ ही जाता है, इवन इफ यू आर नॉट रेसिस्ट, एक अंदर से रेसिज्म आ जाता है कि इफ ही इज अ स्टूडेंट एंड पहला बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, डज नॉट लुक लाइक मी, हमारे ऐसा नहीं दिखता, तो कहीं ये मेरे पर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, दिस क्वेश्चन विल कम इन। बट इफ यू लुक सिमिलर, पीपल ऑफ मॉरिशस, पीपल ऑफ इजिप्ट, पीपल ऑफ नेपाल, इंडिया, वी ऑल लुक सिमिलर, तो वहां पर जब पेशेंट आते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता कि आप जब लैब कोट पहनो, आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, आप हॉस्पिटल में विजिट करने आए हो कि आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, ये सब से पता नहीं चलता। तो अंडर गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर यू कैन डेफिनेटली डू सम प्रैक्टिकल वर्क इन विथ रियल पेशेंट्स। बट वही अगर आप अलग दिखते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज द लॉजिक विद कि बहुत सारे ऐसे कंट्री में जहाँ पर वी लुक डिफरेंट, दे आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट। So there's a hidden logic behind it because the patient will not be comfortable. जब पेशेंट को लगेगा कि नहीं ये तो मुझ पे लर्न कर रहा है,
बट जब वहां पर एक इंडियन इन सारे एक जैसे दिखते हो ना, तो फिर पेशेंट को भी लगता है कि भाई ये तो अपने लोग हैं। इट्स वेरी, मैंने हाउ टू एक्सप्लेन इट, दिस इज हाउ इट इज, मैंने ये सही है गलत है इस पे मैं आप मत जाइए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बट दिस इज हाउ इट इज। व्हेन पीपल लुक सिमिलर and they touch you as a doctor, even if you're third or fourth year student under supervision of a bigger actual doctor, the patient will not be uncomfortable आपको इंजेक्शन लगाने में या आपको आईवी लगाने में या आपको टच करके देखने में समझने में। बट ऐसे कंट्रीज में जहां पर आप अलग दिखते हो, इट विल बी डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई द पेशेंट्स को टच करना रशिया यूक्रेन में नहीं हो पाता कंपेयर टू दैट ऑफ कंट्रीज लाइक मॉरिशस और बांग्लादेश और नेपाल। So my name is Neha. Are you a broad consultant? Please let me know service charge provided by you. नेहा, सर्विस एंड चार्ज प्रोवाइडेड, सी ऐसा मतलब हमारा कोई रेट नहीं है कि सर ये सर्विस और ये चार्ज हम लोग का होता है। इट डिपेंड्स अपॉन विच कंट्री वांट टू सेलेक्ट, विच कॉलेज यू वांट टू सेलेक्ट, व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ऑल दिस थिंग समझ को डिसाइड करके वी एक्चुअली गिव यू द एक्चुअल पिक्चर। वी नीड टू काउंसिल यू, देयर हैज टू बी प्रॉपर काउंसलिंग। इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक एमआरपी है, दिस ये पैसा दो ये कॉलेज जाओ, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, एटलीस्ट नॉट वर्क विथ मी। अ प्रॉपर एजुकेशन कंसल्टेंट विल नेवर गिव you a money and service. If a proper education consultant is there, they will check whether you should be going to one particular country or college or not, whether you have that particular marks which will be selected by this college or not, whether you will be able to like easily adjust in that particular college or country or not. So these are the information with which after that we will be giving you the details where you can go, and then what will be service charge for that particular college or the country, and what will be the services we can provide in that particular college and country. So this is how it works. It doesn't work ki mera is charge hai, mera MRP, and you can pay it and you get the service. This is not how education consultant should work. And admission agent or education consultant में difference है. We are education consultants. We have to consult with us. You have to talk to our counselors, go through the whole process. It will take. It's not like कि आपने पैसा दे दिया आपका admission later आ गया. This is not at least how Aspiring Life Consultants Private Limited, our company, we don't work in that mode. There has been cases where the student want to take admission in medical or engineering through us, and we have told them no, you cannot, because the student was not so fit and so he was not capable. We can understand like based on few parameters, just उनको पैसा लेकर के किसी भी तरीके से हम admission करा दें, this is not what we believe in. So Pranab Wankhande, आपका question abroad. So please, what is your question? I didn't get you. It's abroad या abroad तो आप जाके पढ़ ही सकते हैं. और नेहा, अगर आपको क्वेश्चन है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप अपने काउंसलिंग कराइए, और मैडम भी हैं वहाँ पर, आप उनको कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना मार्कशीट भेजिए, उस पर एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करवाइए। ये जस्ट आप क्या चार्जेस एंड चार्जेस किस लिए हैं, व्हाई वी आर चार्जिंग, व्हाई देयर इज सर्विस चार्ज, व्हाट सर्विस वी आर गिविंग, दिस थिंग्स शुड बी आंसर्ड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। एवरी कंट्री में हर सर्विस पॉसिबल नहीं है। देयर आर कंट्रीज वेयर consultant has to give service in terms of maintaining the hostel. There are countries where the consultant have to maintain the food. तो अब उस पर्टिकुलर कंट्री में क्योंकि कंसल्टेंट के हाथ में ये सब है, बहुत सारे कंट्री में द कंसल्टेंट डोंट हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग। देयर आर कंट्रीज वेयर द कंसल्टेंट हैव टू सेंड टीचर्स फॉर एफएमजी कोचिंग, बट देयर आर कंट्रीज वेयर एफएमजी कोचिंग के लिए टीचर्स को भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर लोकल टीचर इज कैपेबल इनफ टू टीच यू फॉर एफएमजी एज वेल और यूएसएमएल एज वेल। सो दीज थिंग्स, कहाँ पर क्या सर्विस चाहिए और कहाँ पर वो कंसल्टेंट देता है, कि कहाँ पर वो आपको कॉलेज ही में मिल जाएगा, दिस थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू। Sir, your website or contacts, I have given the contact above, Ms. Neha. Please call madam and go through that. Okay, and never think कि ये पैसा किस लिए. You have to justify every service. There are countries where service charges of consultants are high because they have to maintain the hostel. There are countries where hostels are not even maintained by the college. University अपना hostel होती नहीं. University will teach you. The consultant has to keep the hostel. They have to maintain the hostel. They have to charge for the hostel fees. They have to maintain the food. They have to provide the food. All these things consultant do. But there are countries where these things are not important, because like country like Nepal, Bangladesh, their food habits are similar. The hostels are similar. वहाँ लोकल स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस दोनों ही हॉस्टल में रहते हैं, एंड देयर इज नो स्पेशल सर्विस यू हैव एज अ कंसल्टेंट वी हैव टू प्रोवाइड. सो ऑब्वियसली जस्ट यूक्रेन वगैरह में 3 to 4 lakhs आर हिडन फीस में चला जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस, एंड यू विल फाइंड फर्स्ट ईयर फीस इज ऑलमोस्ट 3-4 lakhs एक्स्ट्रा देन दैट ऑफ सेकंड ईयर फीस. सो भले ही बोले वो कंसल्टेंसी फीस नहीं है, लेकिन वो हिडन में ले लेते हैं. सो दीज थिंग्स डज नॉट हैपन इन मेनी कंट्री. So if you are paying to the college,
pay to the college account directly. Whatever amount you are not paying to the college is actually service charge or consultancy fee. This is how you have to judge. So we have definitely our service charge and consultancy fee, and based on what services you are seeking. इट्स नॉट लाइक कि हमारा अगर आपको कुछ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फ्लाइट अपने से जाना है, उनके पेरेंट्स के साथ जाना है, तो वाई आवर सर्विस चार्ज विल इंक्लूड द फ्लाइट. If some student does not want a particular service, or they don't want to do our orientation program, because before sending the student we have a 15 to 20 days of orientation program where we call all the students from all over India, and do they stay together, and they do go through the classes from Indian reputed teachers for anatomy, physiology, biochemistry, even before going to the country, the respective country. So what happens, these students make friends, and they know, like in different countries or different colleges, they have friends who are studying similarly. They can share notes from their respective universities. So ये सब चीजें अगर आप attend करते हो, so obviously you have to pay for it. If you are not attending, you don't have to pay for it. So these things are there. So it's not a plain MRP की service charge होगी. Okay, Neha, thank you for asking this question, and please go, like I've shared the number, call madam, do your proper counseling, share your mark sheet, ask your question, and then take the admission on whichever country you want, and accordingly you can take decision where you want to go and what you ought to pay. सर नेपाल MBBS, आयराम नास, नेपाल MBBS के बारे में आप क्या जानना चाहते हो आयराम? वहाँ पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, यू हैव टू पास दैट एग्जाम. अगर नीट आपने दिया है तो काठमांडू यूनिवर्सिटी का एग्जामिशन लास्ट ईयर हुआ था, इस साल हुआ कि नहीं पता नहीं. लास्ट ईयर जिन्होंने नीट दिया था उन्हें काठमांडू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम के बिना ही डायरेक्ट मेडिकल एडमिशन मिला था नेपाल में. बट त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको जाके देना पड़ेगा. यू हैव टू पास द एग्जाम, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स. Based on that, you have to take admission in different medical colleges of Nepal. अब उसके अलग अलग कॉलेजेस हैं. अब उतने डिटेल्स में मैं नेपाल का जब कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बनाऊंगा. आज तो उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. अगर आपको फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको एकदम डायरेक्ट पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है, प्लीज कॉल द अबव नंबर, सेंड योर मार्कशीट, go through a proper counseling from our counselors, and then take the decision. तो चलिए, बात तो नीट एग्जाम की हुई थी, बट जब वीडियो स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ, विशपाल सिंह जी, लगता है अभी आपने स्टार्ट किया. नीट एग्जामिशन मिलेगा क्या? नीट एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं, ये चीज विद इन अ वीक क्लियर हो जाएगी. बट द चांसेस हैव रिड्यूस्ड कंपेयर आफ्टर गेटिंग द फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे कि द नीट विल हैपन एज पर द डेट गिवन. तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन रिजेक्ट कर दिया फॉर कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट. सो एग्जामिशन कैन बी पॉसिबल, बट द चांसेस हैव रिड्यूस्ड एज पर माय own experience or knowledge. But still there are chances of exemption. But I will tell all the student or parent, don't wait for exemption, rather start preparing for NEET exam, because if it is not exempted, you should not feel कि कुछ लोगों ने बताया था exemption हो जाएगा, इसी चक्कर में आपने preparation नहीं किया and you have ruined your result and you didn't pass NEET. Because passing the NEET is very important. Do a proper प्रिपरेशन, एंड अभी 25 दिन है. बेसिक प्रिपरेशन अगर आप ढंग से करते हैं, पासिंग द नीट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट. सो इफ एट ऑल यू आर लुकिंग फॉर गोइंग अब्रॉड, पासिंग द नीट इज इंपॉर्टेंट. सो पासिंग नीट 28 डेज का अगर आप जस्ट बेसिक रिवीजन भी करते हो, आप आराम से हो जाएगा. आप उस पर फोकस करो. एंड अगर नीट एग्जामिशन होता है, दैट इज वेल एंड गुड, बट उसका वेट मत करिए आप, क्योंकि चांसेस आर लेस. अगर होती है बहुत अच्छा है, नहीं होती है तब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी. एंड डोंट वेट कि एग्जामिशन अगर नहीं होता है तब जाके आप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यस्टरडे क्लियरिफाई कर दिया दैट नीट विल गो एज पर प्लान, एंड एग्जामिशन फॉर अब्रॉड इसका एक वीक के अंदर और जो नेक्स्ट PIL है उसके ऊपर आ जाएगा. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, चांसेस हैव रिड्यूस्ड आफ्टर यस्टरडेज एप्लीकेशन. बट गवर्नमेंट ने एक लॉजिक या जो भी समझ लीजिए बोला है कि प्रिकॉशन के साथ आप करो, कोरोना शुड नॉट स्टॉप द वर्ल्ड, एंड ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सेड. तो बट कितना वो प्रैक्टिकल होता है, कितना उस चीज को मेंटेन कर पाएगी जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. एग्जाम ज्यादा हार्ड होता है क्या नेपाल का? आयरम नाज, नेपाल का एग्जाम हार्ड नहीं होता. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो आपके लिए कोई एग्जाम हार्ड नहीं होनी चाहिए. अगर आप नीट निकाल सकते हो तो आप एग्जाम वहां का निकाल सकते हो. बट या, यू नीड गुड मार्क्स. यू नीड गुड मार्क्स टू गेट गुड कॉलेज इन नेपाल, एटलीस्ट इन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी. तो एरम, अगर आप चाहते हो एग्जाम के बारे में और डिटेल्स में जाना, एग्जाम के वगैरह में, आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करो, मार्कशीट शेयर करो, सो दैट वी कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड वी कैन शेयर द बुक्स एंड द सिलेबस ऑफ नेपाल त्रिभुवन और KU का एंट्रेंस एग्जाम, IOM एग्जाम.
तो सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। इट्स सेम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाएगी। सी एग्जाम्स में तो आप वही आंसर करते हो जो आप पढ़ते हो क्लास 11-12 में, जस्ट उसके पैटर्न चेंज होते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कहीं किसी टॉपिक्स में ज्यादा आते हैं, कहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आती है, कहीं पर इनऑर्गेनिक से ज्यादा आती है। तो यू हैव टू जस्ट go through the last 10-year paper and based on that you have to decide. So this is what different exams does. आज से 6-7 साल पहले जब नीट एक सिंगल एग्जाम नहीं होता था, तो देर हर स्टेट का अपना मेडिकल एग्जाम होता था, बच्चे जा जा करके एग्जाम देते थे, कोई जिपमर दे रहा है, कोई यहाँ दे रहा है, कोई कर्नाटका में एग्जाम दे रहा है, कोई अपने स्टेट का भी मेडिकल एग्जाम दे रहा है, कोई AIPMT भी दे रहा है। तो क्या होती थी, हर एग्जाम में तो पढ़ना तो मेडिकल का 3 ही सब्जेक्ट था, बट द वे ऑफ प्रिपरेशन एंड द वे ऑफ क्वेश्चनिंग वाज डिफरेंट। तो उसके क्वेश्चन में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर एम्स अलग था, नीट अलग था, इस साल एम्स और नीट दोनों मिल गया है, तो वो दोनों को भी एक ही एग्जाम कर दिया गया है, तो एक ही पैरामीटर से चेक हो रही है। बट अगर एग्जाम अलग भी होता है तो ऐसा नहीं कि आप एम्स में कुछ अलग पढ़ाई होती है, एग्जाम एम्स के एग्जाम के लिए कुछ आपको अलग पढ़ना था और नीट के लिए अलग पढ़ना, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होता रहता। तो सेम लॉजिक है, अगर आप नेपाल का एग्जाम देते हो, वहां पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो यहाँ पढ़ाई जाती है वही पढ़ाई जाएगी, बट उसके 10 ईयर का पेपर आप देखते हो और उसके कुछ गाइडेंस हैं जो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ के उस बेसिस पे आप एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। ठीक है आराम, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। ठीक है यशपाल जी, पढ़ाई जारी रखिए, और पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट, नीट एग्जामिशन हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप नीट पास कर सकें। हाँ, नेपाल में एक बीपी कोराला में अगर आप एग्जाम में टॉप 20-30 में आते हैं तो वहाँ पर फीस कम लगती है, उसके स्कॉलरशिप का अलग से कंडीशन है, बीपी कोराला का अलग ऐसे एग्जाम होता है। तो वो सब की डिटेल्स अगर आप चाहते हैं नेपाल का, हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक दिन और सब पे आपको डिटेल्स बात करेंगे। और फॉर द टाइमिंग अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे ऊपर दिए नंबर या नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए और उनसे आप डिटेल्स में ले लीजिए। ठीक है, ठीक है आराम, अच्छी हुई। और चलिए फॉर द टाइमिंग ये वीडियो काफी लंबा हो गया, बट फाइनली मैं सभी को बोलूंगा जो भी नीट इस बार देने वाले हैं, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि नीट के सेंटर्स बढ़ाए जाए, नए सेंटर्स ऑप्शन जो चूज करने का, क्योंकि अभी तक तो एडमिट कार्ड भी नहीं दिया गया है, तो नए सेंटर अगर चूज करने का ऑप्शन हो उसको भी एक्टिवेट कर दी जाए, ताकि अगर कुछ बच्चों ने सोचा हो कि बाद में एग्जाम होगी या उस मंथ में एग्जाम होगी, अकॉर्डिंग उन्होंने सेंटर चूज किया हो, तो वो उसमें ना फंसे। ठीक है, तीसरा, आप सब गवर्नमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करिए कि भाई सारी सुविधाएं अवेलेबल हो वहां पर, ऐसा नहीं हो कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्वेश्चनिंग हो। पेरेंट्स वगैरह अगर वहां पर विजिट करते हैं, उन्हें कितना दूर से अलाउ किया जाएगा, क्योंकि हर बार होता है जब हर साल एग्जाम होता है, आप देखें एग्जाम सेंटर के सामने पूरे पेरेंट्स का भीड़ लगा रहता है, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, रास्ते में बैठे रहते हैं सब, बैठ करके भीड़ लगाए रहते हैं, ऐसा मैंने कई देखा है। अब ये सब चीजें ना हो, इन सबको कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर गवर्नमेंट सोचती है अचानक से उन्होंने एक रूल बना दिया और कल से सब फॉलो करेंगे, तो ऐसे तो हो नहीं पाता, तो गवर्नमेंट को इंश्योर भी कराना पड़ेगा कि रूल फॉलो किया जाए। अब इसको मारपीट करके तो होगा नहीं, उनको प्रॉपर अवेयरनेस करानी पड़ेगी, और वहां पर भी वो सिचुएशन है, हर स्कूल या हर सेंटर के सामने उस तरीके का सिचुएशन और उस तरीके का फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट एटलीस्ट पैंडेमिक स्प्रेड ना करें। और मानसून के समय में ऐसे भी और भी बहुत सारे केसेस हैं, फ्लड आ रही है सब जगह, ये सब चीजों से भी बचना है। तो देखें बच्चे लोगों को प्रॉब्लम ना हो और बच्चे अपने अपने करियर को चूज कर सकें प्रॉपर तरीके से विदाउट हैम्परिंग देयर हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब भी अपनी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे भी ना चले जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ एडुकेटेड पर्सन, बिकॉज आप जब जो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लोग तो कोरोना वॉरियर बनेंगे फ्यूचर के, तो आपको जरूर देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। ये सब चीजों के बेसिस पे ही आप अपने डिसीजंस को देखें और अपने जो एग्जाम देने जाएं अच्छे से पढ़ाई करके जाएं, अच्छे से सेफ्टी के साथ जाएं, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, फेस शील्ड लें, सैनिटाइजर कैरी करें, और खाने पीने का पहले से खा पी के जाए, वहां जाके सेंटर में ऐसा कुछ ना करें कि सेंटर से पहले कुछ खा रहे हो उसके बाद जा रहे हो, ये सब चीजें ना करें, सो दैट एटलीस्ट यू आर सेफ। एग्जामिशन का क्या चांसेस है सर? थ्रू आउट द वीडियो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो में पहले से भी ज्वाइन करते तो एग्जामिशन के चांसेस थोड़े कम गए, बट या देयर आर स्टिल चांसेस, बट एज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि नीट विल गो एज पर द प्लान, एज पर द डेट, तो एग्जामिशन के चांसेस थोड़े तो कम हैं, बट आप उसके भरोसे मत बैठिए, नीट का प्रिपरेशन पढ़ाई जारी रखिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। एग्जामिशन के चांसेस थोड़े कम है, बट अगले 5 दिन में पता चल जाएगा एग्जाम होते हैं कि नहीं,
क्योंकि एग्जामिशन का लॉजिक और नीट को एग्जाम देने का लॉजिक अलग है। एग्जामिशन का लॉजिक था कुछ कंट्रीज में डेडलाइन फॉर एडमिशन आ गए हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज से या बहुत सारे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लेटर्स अगर आते हैं फॉर देयर डेडलाइन तो अच्छी रहती। बट यहाँ पर बच्चों ने डायरेक्ट से अप्रोच किया है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, टू आस्किंग सीकिंग फॉर एग्जामिशन। तो उस केस में कितना सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगी या कितना उसको मानेगी, सोचना मुश्किल है। बट विद इन 25 डेज नीट हो रही है, तो रिजल्ट भी जल्दी लाना पड़ेगा, सो दैट अगर नीट में जो पास करते हैं उनका एडमिशन अब्रॉड में भी हो तो जल्दी हो पाए। तो ये सब चीजों के बेसिस में ही है अब अगला सारा डिसीजन। तो नीट के एग्जाम्शन के चांसेस तो काफी कम है आफ्टर द यस्टरडेज वर्डिक्ट, बट या मतलब अभी भी चांसेस तो हैं, क्योंकि रूल्स इस पर डिसीजन अगले 5 दिन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी इतना ही। काफी लोगों ने आज के क्वेश्चन किए, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। और अगर आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोस बनते रहें तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई लाइव या कुछ नए वीडियोस आते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर नीट।